Everyone, good afternoon. I hope you all can hear me and see me clearly. Good afternoon, Arpit sir. Good I can see afternoon. you clearly. Very good afternoon, Anuj. I'm just setting up the frame. Just give me a minute. Sure, sir. It seems you have a change of background as well this time. Yes. Market is changing, so we are also changing a little bit. I hope it changes in our favor and we can capture it. Definitely. We would give our best to play the momentum and with the ideas. So just give me a minute. We'll just set up the frame, then we can just start the session. Sure. Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon session where we focus around stock options and option strategies. Yesterday we gave a strategy to and stock option as well. Today also we'll try to do the same. अगर हमारे पास time रहा तो we'll take up some stock queries, or else we'll focus more on the stock options and the option strategies which we have, because we don't have any expiry as of now. We'll definitely give you a quick outlook of Nifty and Sensex, जिसकी expiry हमारी कल and परसों है, and also give you the levels probably for that. And at the end of the session, we'll give you the BTSC, that is buy today, sell tomorrow. So please be active on chat. We may ask you questions and do respond. Do ask your queries in the chat. We'll be happy to take it up. And for today's afternoon session, we have Mr. Arpit Beriwal with us. You can see him, you can hear him. And over to you, sir. We can see your screen, it's clearly visible. Sure. Very good afternoon, guys. Very good afternoon. Initially, we used to have weekly expiry, but now as we know, from past couple of weeks, the things have changed. So we have also changed our stance and strategy likewise. So first, starting with the flow for the session would be first we're talking about the headline indices, that is Nifty, Bank Nifty, followed by Sensex. Along with that, we'll be talking about the overall market structure. What are the key levels to look out for? Which are the sectors that are doing well? Which are the sectors that are outperforming, which are underperforming? उसी के साथ में हम BTS के आइडियाज और STPT भी देखेंगे जैसे अनुज ने मेंशन किया है. So first and foremost, starting with Nifty. So as it's an index, the prime index. If we see from last 2 to 3 days, लास्ट ऑलमोस्ट एक वीक में अगर हम देखें, लास्ट फ्राइडे में हमने बहुत अच्छी रिकवरी देखी थी 24,200 से टुवर्ड्स 24,750. हाउएवर दिस वीक वो 24,750 सरपास नहीं कर पाया एंड स्लोली स्टेडीली वी हैव सीन करेक्टिव मूव फ्रॉम हायर लेवल्स. सो वो स्लोली स्टेडीली में भी निफ्टी में हमने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का डिप देखा है 24,750 से लेके 24,200 तक के लेवल तक का. आज भी हमने 150 से 200 पॉइंट का करेक्शन देखा है एंड इफ यू सी काफी वोलेटिलिटी है. So for a good for option buyers, but very tricky and very difficult for option writers. तो ओवरऑल हम सेटअप वाइज लेफ्टी लेवल्स के बारे में बात करें, 24,444 24,444 एक लेवल होता था जो हम देखते थे कि सपोर्ट की तरफ जो प्ले आउट करे, बट इमीडिएट बेसिस पे वही एक हर्डल की तरफ प्ले आउट हो रहा है. सो राइट नाउ निफ्टी इज अराउंड 24,175 ऑन इमीडिएट बेसिस. निफ्टी जब तक 24,444 24,444 के नीचे है थोड़ी वीकनेस ही रहेगी, नीचे 24,100 24,000 के लिए. इसी के साथ एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, आज और कल में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज यूएस फेड रेट का जो डिसीजन है एंड जो कमेंट्री है, दैट इज एवरीवन इज लुकिंग आउट फॉर एंड बिकॉज ऑफ विच काफी वोलेटिलिटी भी है. सो निफ्टी के बारे में बात करें हम, एक ब्रॉडर रेंज में है 24,000 से लेके 24,800 की. इमीडिएट बेसिस पे 24,444 एक मेजर हर्डल है, जब तक उसके नीचे रहता है, नीचे में 24,100 24,000 तक के मूव हमें देख सकते हैं. इसी के साथ नाउ मूव ऑन टू द बैंक निफ्टी. So Bank Nifty was known for its expiry moves, but now if we see post expiry, weekly expiry also, we are seeing very good moves almost on daily basis. So अगर हम Bank Nifty का चार्ट देखें, so last 2 to 3 days में एक बड़ी रिकवरी हमने देखी थी 52,222 से लास्ट फ्राइडे को टुवर्ड्स 53,500. वहां से वापस हमने फॉल्स ब्रेकआउट देखा और वापस बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट करेक्ट हो चुका है. अगर आप ये डेली चार्ट देखेंगे, यहाँ पे चार्ट इज विजिबल. अनुज, द चार्ट इज विजिबल राइट? Sir, yes, right now it's visible. Actually, we had Stockholm screen, but now we can see it. परफेक्ट. सो अगर आप ये चार्ट भी देखेंगे तो पहले जो एक रिटेस्ट जोन हुआ करता था 52,500, आज उसको भी ब्रीच किया है एंड आज मेनली अगर आप देखा तो एचडीएफसी बैंक एंड प्राइमरी आईसीआईसीआई बैंक जो है ये जो वीकनेस को इंटेंसिफाई कर रहा है. डेली स्केल पे अपने 50 डेमा के पास में. अगर मैं इसी के साथ अगर वीकली स्ट्रक्चर देखूं, सो इफ यू लुक एट द वीकली स्ट्रक्चर फॉर दिस बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर, लास्ट 3 हफ्तों से एक ब्रॉडर रेंज में है. नीचे 51,750, ऊपर में 53,750. पिछले 2 दिन के करेक्टिव मूव के बाद वापस बैंक निफ्टी एक सपोर्ट जोन के पास में आया अराउंड 51,750 52,000.
बट अगर आज सुबह से हम देखें तो काफी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली टू प्ले ऑन द पुट साइड, एंड सिंस मॉर्निंग वी हैव बीन प्लेइंग ऑन द पुट साइड। बट इसमें हम थोड़ा स्ट्रेटेजी हमने चेंज की है, बिकॉज हमें मंथली ऑप्शन से प्ले करना है, सो हम मंथली पुट्स के थ्रू प्ले कर रहे हैं, एंड काफी अच्छा मूव हमें मिला है सिंस मॉर्निंग, बिकॉज काफी अच्छा करेक्टिव मूव है, 700 पॉइंट की गिरावट देखी है। सो लेवल्स के बारे में बात करें, इमीडिएट बेसिस पे 50 to 500 एक मेजर हर्डल जोन है, नीचे में 51,700 जो एक गैप एरिया है, और उसके बाद नीचे आता है 51,200। इसी के साथ अगर हम देखें तो इवेंट की वजह से वोलेटिलिटी काफी है। सो गाइस, जो भी आप पोजीशन साइजिंग कैरी कर रहे हैं निफ्टी के लिए या सेंसेक्स के लिए, आप वो ध्यान रखिए कि इवेंट भी है तो उसके आपसे ही प्ले आउट करना है। सो बैंक निफ्टी में भी हमारी स्टैंड इमीडिएट बेसिस पे नेगेटिव है, 50 to 500 हर्डल है, इमीडिएट बेसिस पे 52,300 और नीचे में 51,700 सपोर्ट है, एंड देन 51,500। इसी के साथ अगर हम दो तीन कंपोनेंट्स के बारे में भी बात करें, सो मेनली जो फॉल कर रहा है वो एचडीएफसी बैंक एंड लाइकवाइज आईसीआईसीआई बैंक, बिकॉज दिस आर द प्राइमरी हैवीवेट्स जो बैंक निफ्टी को पुल भी करते हैं और नीचे की तरफ सेम पुल डाउन भी करते हैं। एडवांस रिटर्न रेशियो के बारे में बात करें, 7 काउंटर बैंक निफ्टी के नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है। निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें एडवांस रिटर्न रेशियो, तो वो भी बेयर्स के फेवर में ही है। हैविंग सेड दैट, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में जितना हमने डिस्कशन किया, बट सिल्वर लाइनिंग जो पूरे मार्केट में है वो हमने ब्रॉडर मार्केट में देखी है। लास्ट वीक अगर देखे, लास्ट वीक से हम देखे तो काफी अच्छा मोमेंटम हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में देखा, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी डेफिनेटली पेन में है, वो क्लियरली दिख रहा है। बट अगर आप देखें सेक्टर जैसे एक्सचेंजेस, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, मिड कैप आईटी, सिलेक्टिव फार्मा एंड देन मेजर रियलिटी स्टॉक्स काफी आउट परफॉर्म किए हैं। सो अभी ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, इंडेक्स वाइज हमें एक ब्रॉडर रेंज में प्ले करना पड़ेगा। दिमाग में रखिए कि वो रेंज बात प्ले आउट हो रही है। राइट नाउ निफ्टी इज अराउंड 24,200 ही, बैंक निफ्टी भी 50,000 के पास में, बट सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बहुत अच्छा है। सो नाउ कमिंग लिटिल बिट ऑन टू द स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स। सो फर्स्ट हमारा जो पिक है दैट इज फ्रॉम द निफ्टी रियलिटी पैक। काफी हम बुलिश भी थे और काफी अच्छा मूव भी हमने देखा पिछले कुछ हफ्तों में। सो ओवरऑल उसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट सीरिया आइडिया दैट इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, दैट इज प्रेस्टीज स्टेट। दिस इज अ रीसेंट एंट्री ऑन द फ्यूचर साइड आल्सो। सो अगर आप प्रेस्टीज स्टेट का चार्ट देखें, सो वीकली सेटअप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट एक रेंज ब्रेकआउट दिया काफी हफ्तों के बाद, डेली स्केल पे भी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। सो फर्स्ट सीरिया आइडिया दैट इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द रियलिटी इज प्रेस्टीज स्टेट। 1883 अभी चल रहा है, अब करंट लेवल पे थोड़े से डिप पे 1870 से लेकर 1880 की रेंज में बाय कर सकते हैं। 1820 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 2000 के टारगेट के। सो दिस इज वन ऑफ आवर सीरिया आइडियाज फ्रॉम 7 to 10 days perspective. Anuj, you can note down. Yes, sir. We are sharing it. Sure. Along with that, if we see current market जो है, मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम है, डिपॉजिटरीज, एक्सचेंजेस, कैपिटल मार्केट थीम में ही, उसी में हमारा ऑलरेडी स्टॉक आइडिया हमने आज ही इनिशिएट भी किया है सीरिया में फ्रेश, दैट इज केफिन टेक। तो केफिन टेक अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, मंथली स्केल पे अपट्रेंड में है, डेली स्केल पे भी स्ट्रॉन्ग। आज नया फ्रेश पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है, ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 6 से 7 दिनों के बाद, फ्रेश अप मूव। सो आई थिंक डेफिनेटली ये फ्रेश रैली एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड्स 1350 1380 लेवल्स तक का। तो दूसरा हमारा टॉप पिक रहेगा फ्रॉम द एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरी स्पेस इज केफिन टेक। 1318 चल रहा है अभी, थोड़े से डिप पे थोड़ा सा कूल ऑफ होता तो बेटर रहेगा। 1300 से 1305 की रेंज में आप बाय करें। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 1240 का, 1250, ऊपर में 1400 के टारगेट के। So these are the two ideas that we have shared for the CDI perspective. And if you see the overall market setup wise, मार्केट में काफी डिस्पैरिटी है। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो दिस कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर। आज थोड़ा सा हमने मिड कैप स्मॉल कैप में कूल ऑफ देखा है, बट टिल यस्टरडे देयर वाज वेरी गुड एक्शन इन स्टॉक स्पेसिफिक। सो गाइस ध्यान रखिए, इसमें काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक्स में हो रहा है। सो आप डेफिनेटली आप वो अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू सी द लिकर स्पेस इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, काफी हमने पॉजिटिव भी रहा है, काफी अच्छा मूवमेंट भी प्ले आउट हुआ है। सो उसी में एक और स्टॉक जो अच्छा लग रहा है स्लोली स्टडीली है रेडिको खैतान। अगर आप देखें चार्ट सेटअप वाइज स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, ट्रेडिंग है लाइफ हाई टेरिटरीज, धीरे धीरे बेस का स्टॉक ऊपर शिफ्ट हुआ है, फ्रेश कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है 2500 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। सो आई थिंक इसका भी जो नेचर है और जो पूरा सेक्टर एक थीम आउट प्ले आउट हो रही है, यू कैन सी डेफिनेटली गुड 7% रैली फ्रॉम ईयर ऑन आल्सो। सो रेडिको खैतान आल्सो लुक्स गुड फॉर 8 to 10%। सो आइडियाज में हमने सबसे पहले शेयर जो किया था वो द प्रेस्टीज स्टेट, सेकंड वाज केफिन टेक एंड थर्ड रेडिको खैतान।
So ये हुए from the stocks angle. Now coming back to if we see from the Nifty perspective and Bank Nifty, so Nifty का अगर हम चार्ट देखें तो continuously lower rise बना रहा है hourly चार्ट पे, and आज अगर आप देखें तो already indices are down almost by 1%, 0.7 to 1% indices are down. So कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, but ध्यान रखिए इवेंट भी है, so definitely volatility रहेगी. एंड इफ यू सी मार्केट के जो स्विंग्स है वो काफी फास्ट चेंज हो रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे भी. इमीडिएट बेसिस पे हमारा स्टैंस नेगेटिव है. कल भी हमने नेगेटिव भी प्ले आउट किया था, आज भी हमने नेगेटिव भी प्ले किया है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में. Coming back to Bank Nifty, one thing I would like to mention, next week would be the monthly expiry for Bank Nifty, guys, and that would be on 24th, one day prior to Christmas. So I think the coming week from tomorrow onwards, we'll get very good, better opportunities to play the monthly options in Bank Nifty. Immediate basis पे 52,000 के वहां ट्रेड कर रहा है. 51,700 एक मेजर सपोर्ट है, वो सस्टेन नहीं करता है तो उसके नीचे हमें वापस वीकनेस दिख सकती है टुवर्ड्स 51,200 तक का. Upside में hurdle है 52,500 and then 52,750. Now, if you see over the market setup wise, one more thing that has risen is India VIX. So अगर हम डेटा के बारे में बात करें तो इंडिया विक्स में पिछले 2 से 3 दिनों में 10 से 12% का मूवमेंट आया है, बिकॉज ऑफ विच आज काफी कॉल राइटर्स बोल रहे हैं कि मूवमेंट जो प्रीमियम्स है वो डीके नहीं हो रहे, बिकॉज देयर इज अ इवेंट लाइनअप एंड एट द सेम टाइम मोमेंटम है ऑन द पुट साइड. So such scenarios are very tricky for the option writers, but generally such markets are very good for the option buyers because हमें momentum चाहिए होता है and हम वो momentum मिल भी रहा है. So having said that, in the meantime, what we can do, Anuj, we can take couple of stock queries and then again we can talk about the levels and certain strikes that we can look out for to play the swing. Sure, sir. So now that index option trades are limited and chances of making profit has been limited, can't we have hedging trades option in specific stocks? Yeah, definitely we can have. So as per the setup wise, if we get, because the stock option is, we need immediate momentum and that has to be the FNO space. So we are looking for the opportunities. As soon as we get the opportunity, there are a couple of counters on radar. So as soon as we get any opportunity on the stock side, we'll update on it. In the meantime, we can take certain queries and strategies. As of now, it has been tough. So far, it has been a tough month for the strategy front also, because the market swings are so wild within that range in which the strategies are not working well that way. But still, definitely would have some solution to it. Having said that, as we have an event lineup, so obviously we would advise overnight positions जो index में लेके जा रहे हैं, naked मत लेके जाइए. Better to go with barefoot spreads or iron butterfly. That would be better. And coming on to the stock options that I will definitely looking out for and will update in a bit. Sir, what is your view on Kotak Bank? Kotak Bank, so one of the highly underperforming counter within the banking space. If you see from last 3 years, it has gone nowhere. On the immediate basis also, अगर हम देखें weekly scale पे support है नीचे 1750 का, ऊपर में 1820 का hurdle है. If you see the setup wise, it's very dull, very lackluster. So कोई भी positions है, better to exit it. या थोड़े से bounce अगर आता है around 1800, 1810 levels का, better to exit. There is no major momentum in this space. Sir, Dixon, one of our favorite and the most outperforming stock in the entire bull run we have seen in the last couple of years. If we see very, very strong setup from almost, we've seen a rally from 15,000 to 19,000. अच्छी sharp rally हमने देखी पिछले 2 से 3 हफ्तों में ही. So setup wise, every dip पे buying is visible, and looking at the positional wise, we are very bullish for 20,000 and plus 22,000 levels also on this stock. So from a positional wise, support आ रहा है 17,500, थोड़ा बड़ा support zone है because काफी stock में rally हुई है. So I think better to buy some dip near 18,400, 18,500, 17,500 का stop loss रख के ऊपर 20,000 और फिर 22,000 के positionally target के लिए आप hold कर सकते हैं. किसी के पास already position है तो continue to hold with a stop loss of 18,000 because थोड़ा high beta counter है, but overall setup wise काफी strong है. Lemon Tree. Hotel space is back in action, and if you see overall looking at the setup wise, Lemon Tree, Indian Hotel, Chalet Hotel, all are looking very strong. Can you just see the V-shaped recovery in this counter? So just let me open up the weekly chart.
So weekly chart, we have seen strong high rise, high lows formation in last almost 7 to 8 weeks, back to its previous supply zone, hurdle zone. So I think अच्छी रैली हमने देखी 110 से 155 तक का 155 क्लोजिंग के ऊपर एक फ्रेश मोमेंटम क्रिएट हो सकता है फॉर 10 to 50% रैली. किसी ने ऑलरेडी पहले लिया हुआ है, सो आई वुड एडवाइस ये लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और 155 156 की क्लोजिंग के ऊपर ही फ्रेश इनिशिएट करना चाहिए बिकॉज एक अच्छी रैली आई ऑलमोस्ट 110 लेवल से 155 तक के मूव तक. So CDSL entry price at the current level? Right? CDSL entry price. Yeah, at the current levels. I guess the question is, can we enter at the current levels? So if I see the setup wise, the rally has been quite steep in last couple of weeks, from almost 1500 to 2000. अच्छा ब्रेकआउट दिया था 1700 के ऊपर. आई थिंक करंट जंक्शन पे वेट करना चाहिए बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल अगर ट्रेडिंग बेट है. एनी कंफर्ट नियर अराउंड 1850 1880 लेवल्स, यहाँ से 3 से 4% का डिप आता है तभी हमारा एंट्री करने की सलाह रहेगी. 1850 से 1880 के रेंज में बाय करें. 1800 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 2100 और फिर 2200 के टारगेट के. Sir, what about, sorry, no, not this one. 1 point for long-term view. Sorry, 1 point. 1 point. 1 point solution. Let me have a look at that chart. Is the price 56? I just need to check first. Can you check the price if possible? They have not written the prices. View on 1 No, point. so if you look at the chart wise, if we see the chart wise, after sharp uptick from last almost couple of weeks, it is trading in a broader range. लॉन्ग टर्म व्यू अगर बोले तो अभी तो ओवरऑल स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है. नीचे 50 का सपोर्ट है, ऊपर में 70 का हर्डल है. सो नो मेजर कन्विक्शन एज ऑफ नाउ. एक ओवरऑल साइडवेज टू पॉजिटिव है बट फ्रेश मोमेंटम 70 के ऊपर ही होगा. इमीडिएट बेसिस पे 50 का सपोर्ट है. जब तक 50 के ऊपर है, कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक. Views on K FinTech, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. We have given a conviction delivery trade on that. Sir, we have given levels for Nifty. Can we have some levels for Sensex as well? Yeah, sure. So if I talk about overall Sensex wise, so if we see setup wise, Sensex is also trading in a broader range from last couple of days. So if we see over the setup wise, it has been tricky relatively, and generally we try to correlate with Nifty also, as both have positive correlation almost of 95%. So Sensex is also trading in a broader range in between almost 79,900 to 80,000 to 82,000 broader range. So if we see right now, even Sensex is down by almost 600 to 700 points. So level wise, if we talk about 79,500 is a major support for Sensex. On the upper band, 80,500 is the hurdle zone. So likewise, Friday would be the expiry for Sensex. Tomorrow is expiry for Nifty. So level wise, 79,500 is the important support zone for Sensex. And on the upper band, 80,500 is the hurdle zone for Sensex. So generally, Nifty Sensex has a positive correlation, so they both move in line as we have always seen. But major focus would be on Nifty because we have an event also, and tomorrow we have expiry. So a lot of things would be there that would be lined up for tomorrow. And we can see the repercussions of both the indices movement also. Yeah. Along with that, one more that we see overall, instead of as the market breadth is slightly negative, and we have seen some cool off. So STBT idea we have flashed on terminal also, and that is Piramal. So if you see the overall chart setup of Piramal Enterprise, we have seen a sharp downtick, and that is a STBT idea. And as market is in favors of bears, so we have to be a little bit flexible and play out that idea. So अभी चल रहा है 1150. आप ये लेवल पे शॉर्ट करें. 1180 का स्टॉप लॉस आप रखिए. नीचे टारगेट 1111 और फिर 1100 के लिए. That is a STBT. That is the first STBT idea. आप इसको फ्यूचर में सेल कर सकते हैं. ऑलरेडी स्टॉक में ऑलरेडी डिप आ गया है, बट स्टिल देयर इज सम पेन. So this levels and this idea we have already flashed on terminal. Along with that, if we see within this, if we see the stock options के अगर हम बात करें, तो अगर आप PEL का चार्ट हम जैसे हमने लगाया हुआ है, and if we see the setup wise also, we have seen quite pain in the stock. इसी के साथ आप स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं. 1160 का जो पुट अभी चल रहा है, अराउंड, I'll just check the price once again.
या इट्स अराउंड 23-25 लेवल्स, 1160 का पुट, आप इसमें स्टॉप लॉस रखिए 18 का, ऊपर टारगेट रखिए 35 से 38 तक का. सो पीएल इज अ एसटीबीटी आइडिया. अलॉन्ग विद दैट इसको आप स्टॉक ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकते हैं. 1160 का पुट आप लीजिए, बाई चल रहा है 24 से 25 के रेंज में, 18 का एसएल रख के ऊपर 35 और फिर 38 के टारगेट. I hope the levels are clear, Anuj, for the stock options. Yes, sir, it's clear. Perfect. Sir, your view on Vare? Wari. I think recently the stock has been listed, and let me go into the NSE one, Wari Energies, right? Yeah, so if you see the chart history, it's very short, but the nature of the stock has been quite volatile, quite massive swings. We have seen a good uptick from 2400 to 3600, then corrective move, then again back to 3400. So immediate basis अगर देखें, so as the chart history is very short, सपोर्ट वाइज अगर आप देखें तो 2800 का एक मेजर सपोर्ट है, अभी डेली स्केल पे लो राइज बना रहा है, ऊपर से कूल ऑफ हुआ है. 2800 एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है, जो गैप एरिया है. अपसाइड में कोई भी सेटअप लो राइज को नेगेट करता तभी तेजी होगी, तब तक ओवरऑल सेटअप वाइज एक थोड़ा सा पॉज में ही है. इसी के साथ अगर आप देखें सो ब्रॉडर मार्केट भी थोड़ा पॉज में, जिसके वजह से बहुत सिलेक्टिव सेक्टर्स में मोमेंटम है और वो सेक्टर्स में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है. सो आई थिंक लेवल वाइज 2800 इज अ मेजर सपोर्ट जोन. 3000 के वहां स्टेबल अगर होता है तभी फ्रेश मोमेंटम क्रिएट होगा टुवर्ड्स 3400 लेवल्स. Sir, your view on HAL? HAL. So some momentum was seen in this space in last couple of days. However, आज अगर आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से हमने करेक्टिव मूव देखे, एंड हाल ने भी डेली स्केल पे लोअर को नेगेट किया है. ऑलमोस्ट ऊपर से हमने 200 पॉइंट की गिरावट भी देखी है. बट सेटअप वाइज अगर देखें, जो पहले कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, हम काफी टाइम से बेरिश थे डिफेंस स्पेस और शिपिंग के बेस स्पेस में, अब एक मार्केट एक साइडवेज हो गया सेक्टर वाइज. सो आई थिंक सपोर्ट वाइज 4400 एक इमीडिएट मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 4650 का हर्डल है. सो ओवरऑल सेटअप वाइज रेंज बाउंड है, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो गया है. सो आई थिंक 4400 वुड बी अ गुड सपोर्ट जोन, वहां पे आप ऐड कर सकते हैं. ऊपर में हर्डल है 4650. Coming back to the Nifty setup, if we see, let me just have a relook at the chart, and if you just see the chart setup wise, Nifty 24200, जो फ्राइडे का स्विंग लो था अराउंड 24100-150 अराउंड, वहां पे अभी आया है, एंड अभी साइडवेज हो गया है क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छा खासा करेक्टिव मूव देखा है. बट इमीडिएट बेसिस पे वी आर ऑल वेटिंग फॉर द इवेंट. आई थिंक दैट वुड बी प्लेइंग अ वेरी गुड ट्रिगर एंड वेरी ह्यूज ट्रिगर, एंड ऑलरेडी हमने करेक्टिव मूव उसके पहले देखा है. सो लेवल्स हमने ऑलरेडी शेयर किए हैं. 24,444 एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए. नीचे में सपोर्ट आ रहा है 24,000 तक का. बैंक निफ्टी में मेनली आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक जो पेन में है, उसके वजह से बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट हमने देखी. अच्छे स्विंग्स भी हमें मिले आज. And strategy, I think, or option buying will start focusing more on from tomorrow onwards, because that will be just couple of days for monthly expiry. So definitely हमें एक अच्छा momentum मिलेगा. Stock ideas में हमने 2 से 3 ऑलरेडी शेयर किए हैं. That is Tifin, Radico Khaitan, and from the real estate space, Prestige. So guys, also keep in mind कि sector specific action बहुत अच्छा चल रहा है. जो sectors uptrend में है, for example mid cap IT. So as we are seeing, mid-cap IT has been continuously one way. Likewise, real estates, likewise exchanges, depository stocks also have seen very good momentum. So that has been the important. Along with that, if we see PEL, the stock option जो हमने recommend किया था 25-26 के around, अभी थोड़ा सा momentum भी आया है. Now it has spurred to 30 levels. तो हमारा STBT idea भी है. So guys, wherever we are getting the opportunity, we are trying to make the most of it and then share it with you guys. So there's some uptick also from 25 levels. It is now to 30-31 levels. PEL put 1160 का. Yeah. So PL we have already given update. Stocks में हमने already share किए जो positionally अच्छे लग रहे हैं. Index Nifty Bank Nifty levels we have shared. Along with that, one BTST idea we have just flashed on terminal and looking very strong. That is
क्लीन साइंस, इफ वी सी क्लीन साइंस का स्ट्रक्चर देखे तो डाउन ट्रेंड में था, बट एक मैसिव वॉल्यूम हमने देखी थी 4 दिन पहले, और आफ्टर 3 से 4 दिन कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश पुल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दे रहा है. सो क्लीन साइंस इज अनदर बीटीएसटी आइडिया. अभी 1450 के अराउंड चल रहा है. आप करंट लेवल पे बाय करें. 1420 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 1490 और फिर 1510 के टारगेट के लिए. क्लीन साइंस इज अ बीटीएसटी आइडिया. एसटीबीटी हमने ऑलरेडी शेयर किया. क्लीन साइंस इज अनदर बीटीएसटी आइडिया. रिपीट द लेवल्स. 1450 अभी चल रहा है, 1450 55 चल रहा है अभी. 1450 के रेंज में बाय करें. 1420 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर 1490 और फिर 1510 के लेवल्स के. Sir, we'll take few more queries. Your view on Asian Paints. If you see overall Asian paint, the paint as a sector has been quite underperforming for last couple of quarters. अगर आप chart setup भी देखें तो post its result, we have seen a massive gap down post 2800 breakdown, and we have seen continuously lower rise, lower bottom formation on this scale. So अगर हम weekly setup wise देखें तो काफी pain में है. Yes, it's a surprising thing that one of the best blue chip companies is underperforming, but yes, that is how the market is. So levels के बारे में हम बात करें, immediate basis पे 2450 का immediate hurdle है. जब तक उसको सरपास नहीं करता है, downside open है towards 2300 2200 levels. So I think avoid bottom fish. इन्वेस्टमेंट वाइज भी हम यही सजेस्ट करेंगे, जब तक 2450 के ऊपर स्टेबल नहीं होता तब तक अवॉइड करें. मेजर हर्डल है 2450. One more thing I just like Tiga on yeah, gone. No, you can tell me the query, then I'll just add few comments to that. What is the stock name? Tiga? Tiga, TEGA on DTF. TET? No, TEGA. TEGA. Okay, Tiga Industries. Tiga Industries, yeah. Yeah, on DTF. Yeah, Tiga Industries, we see the chart setup wise, from after corrective move from 2200 levels, it has taken some pause near its on weekly scale around 1650 levels. Lower rise को negate किया है. So I think from here on, the move started from this level itself. So risk reward is quite favorable. आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या कोई पोजीशंस अगर आपको ऊपर फंसे हैं तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं. आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 1600 का. धीरे धीरे हमें ये 1800 और फिर 1900 तक का मूव दिख सकता है. As I already mentioned few things, so as we've seen from last couple of last 2 to 3 months has been very much significant for markets. And if we see the sector rotation has been very quick. If you see the new age companies also like Paytm, Zomato, Policy Bazaar, and lot like the new age companies, the digital companies has seen a tremendous shift. And I think going forward also this has been going to be the theme for the market. So guys, it's very important that conventional style of trading or investing has changed. And now, along with that, one more thing that has changed is the new sectors theme is playing out. New sectors and new age companies are playing out. So also you need to understand these are the sectors that are going to lead from here in coming couple of quarters and couple of years. So we need to put our bets, and sizing in this sector is very important. Along with that, as we are already talking about, fertilizer stock also has seen some good momentum. And if we see fertilizers में RCF का हमारा रिफ्रेश हमने सीरिया कॉल ऐड किया है. वीकली स्केल पे एक रेंज ब्रेकआउट दिया है ऑलमोस्ट 175 180 के ऊपर. एंड जनरली रिसर्च काउंटर्स एक बड़े मूव्स दे देते हैं. सो आरसीएफ इज अ सीडीआई आइडिया. 184 अभी 185 अभी चल रहा है. आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं. 178 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर 195 और फिर 200 के लिए. दैट वुड बी आवर लास्ट सीडीआई आइडिया कॉल फॉर द डे. I can still see काफी सारे questions आ रहे हैं guys, but it's already time, so we won't be able to take any more. We can just take one or two more, and then accordingly we can just close out the session. Got it. I'll just go on the top. So view on Quest, please. QUESS. Yes. So since yesterday, I think this stock has been on our radar, and if you see, massive volumes has been picked up yesterday. There was some news also regarding this. If we see from purely from a technical perspective, let me have a look on the daily chart. So yesterday it gave almost a range breakout with good volumes above 720 levels. आज हमने थोड़ा ऊपर से कूल ऑफ देखा है, बट आई थिंक अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं. सो डेफिनेटली दिस मूव इज लाइकली टू सस्टेन. 730 735 मेजर सप्लाई जोन था, उसको अभी अब्सॉर्ब कर रहा है.
I think a closing about 735 will definitely open the room for upside towards 750, 780 levels. So Quest Corp में 700 का immediately support है, ऊपर में 750 और फिर 770 के levels के. Got it. So, sir, this will be all for today. Thanks a lot, everyone, for joining in. अगर आपके questions रह गए unanswered, so feel free to ask them on Stockomo. We'll be happy to answer. Our team, Prashant, Avinash, our research team will be really happy to take queries on Stockomo. Thank you, everyone. Thank you, Arpit, sir. Thank you all.